यादव, डॉक्टर सुधीर यादव, बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ लफ्ज़ अंग्रेज़ी में बोल देता हूँ ताकि मिस्टर आय को भी समझ आ जाए, ट्रांसलेशन की आवश्यकता ना पड़े। इंडिया एंड चाइना are the oldest civilizations in the world. Historically, there has been a coming between the Indians and the Chinese for the past thousands of years. Today, China is a big economic power, but there was a time when China was struggling to make its people not only literate but financially able. They have been able to do so in the past 20-25 years. India is still struggling. But if we take the historical perspective, and if we also say that history repeats itself, I wish to say here, Mr. I, that the next century, the one that we are living in this century, by the time that this is over, it will be the Asian century all over again, and India and China will be the foremost powers financially in the world. Not America, not France, not Russia, none of these countries, but India and China. And to give it a historical perspective, I would also say that the Southeast Asian countries, they are called the Indo-China belt. It's not called the Chinese belt. It is not called the Indian belt. There was a time when the Indians and the Chinese had influence over these areas, and because of that, it is even now today dubbed world over as the Indo-Chinese nations. We had influence past our borders. We wish to inculcate the same reciprocity between India and China that existed 1,000 years ago. Small skirmishes, small irritations should not come in the way of these relations developing to be a fruitful level. And with that perspective, I invite, or rather I'm happy to see that you've been able to set up a company in India, in my constituency, in Bhava. My good wishes to you. Henceforth, if there is any problems, I am sure that with the help of Monica Yadav and Mr. Upadhyay, you can always get in touch with me. Whatever can be ironed out at the level politically, I will be happy to help. Today is the first time that I have become aware that your company is putting in money under CSR for the agriculturists. Mostly CSR funds go into various other fields, but India is still primarily an agricultural economy. 60% of our people still live in villages, 40% live in towns, but the migration towards towns is increasing. One is hoping that the towns do not become so big that they start to burst at the seams. And to ensure that that does not happen, we need to ensure that the people who are today residing in villages continue to do so, and they get all the facilities that are available in towns, they are made available to them in the villages itself. So for that also, I thank you that you've been good enough to put in some money from out of the CSR funds for the development of this center, the Krishi Vigyan Kendra, which looks after the needs of progressive farmers and makes suggestions to them as to how to earn more from limited land holdings. So for that also,
you have taken a lead, and I congratulate on doing so. Also your staff that has suggested that some of the money should be put into agriculture. This is the company जो ये आज के दिन हमारे यहाँ पर KVK के अंदर CSR फंड से कुछ पैसा तजवीज़ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये प्रावधान है कि जो भी कंपनी बड़ी बन जाती है 500 करोड़ रुपए से अधिक जिसका या तो मुनाफा होता है या 1000 करोड़ रुपये का जिसका टर्नओवर हो जाता है, तो वो अपने मुनाफे में से 2% पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भलाई के लिए इस्तेमाल करे, और चीज़ों के लिए कुछ निर्धारित हैं जिसके अंदर ये कर सकते हैं। तो उसी के तहत इन्होंने आज के दिन हमारे को हिस्सेदार बनाया है KVK में। पैसा तो इनके पास और भी जगह तजवीज़ किया गया होगा, लेकिन शुरुआत हुई है, और शुरुआत के लिए मैंने इनसे मुबारकबाद इनको इस तौर पे दी है कि आप लोगों ने कम से कम किसानों का, ख़ासतौर पे हरियाणा के अंदर किसान प्रदेश माना जाता है, तो आपने ये पैसा जो तजवीज़ किया है इसके लिए मैंने इनको शुक्रिया अदा किया है। और मैं आज के दिन यहाँ बैठ करके 1-2 मीटिंग मैंने और भी करी हैं। आज के दिन यहाँ बैठ करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2-4 हमारे किसान अलग अलग फील्ड के अंदर जो खेती कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल खेती नहीं है, उसको सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई। हरियाणा के अंदर ट्रेडिशनली तौर के ऊपर खेती तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस मोल्ड से बाहर निकल करके हम नए मोल्ड के अंदर नहीं जाएंगे तो ज़मीन तो घटती जा रही है। हमारे बच्चे पोते कैसे उसके ऊपर से कमा पाएंगे? कुनबा बड़ा हो रहा है, ज़मीन घटती जा रही है, शहरों के अंदर लोग पलायन करने लग रहे हैं। तो जब तक कि हम अपने किसानों के अंदर, खेतों के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं दिलवा पाएंगे, अपने कुनबे के लिए प्रावधान फाइनेंशियल तौर के ऊपर नहीं कर पाएंगे, तब तक लोग भागेंगे, शहरों की तरफ कूच कर जाएंगे। तो जो आज मैंने सुना है 3-4 लोगों से, जो कुछ जवान है, कुछ रिटायर्ड है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी समय जब इन्होंने मेरे को इन्वाइट किया मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो ये मुझे अपनी विस्तार से बात भी बताएंगे और मुझे बताएंगे भी कि भाई इस तौर के ऊपर हमने प्रेरणा ली। क्योंकि जो प्रेरणा आपने ली है, मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम के माध्यम से आप लोग औरों को भी दें, ताकि नकल और भी करें। बस फ्लैटरी का कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रास्ता है वो किसी की नकल करना। जो किसी की नकल कर लेता है, इसका मतलब नकल करने वाला उसको रिस्पेक्ट देता है। तो आज के दिन अगर आप लोग ये रिस्पेक्ट कमा लेते हैं और औरों को अपने नकल करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर हमारी हालत, हमारे प्रदेश के लोगों की भी यहाँ पर और बेहतरीन हो जाएगी। और न केवल किसान, लेकिन मजदूर वर्ग और कमेरा वर्ग और महिलाएं, ये सारी की सारी मिल करके हमारे हरियाणा की माली हालत को सुधार देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जिम्मा भारत सरकार ने आपके इसके ऊपर दिया है। 2 साल जो बीते हैं कोविड की वजह से, मुनाफा लोगों ने नहीं कमा पाया, ना किसान ने कमाया पाया, ना इंडस्ट्रियलिस्ट ने कमा पाया, ना इंटरनेशनल कंपनी ने कमा पाया। अब उम्मीद ये है कि हम इससे बाहर निकल गए या बाहर निकलने की कगार के ऊपर है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आप लोगों ने इनको यहाँ पर आमंत्रित किया है, या आपके साथ जो उनके साथ संबंध रखते थे उन लोगों को यहाँ प्रेरित करके यहाँ बुलाया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो तालमेल बैठा है बिटवीन इंडस्ट्री, बिटवीन फार्मर्स एंड बिटवीन द इंटरमीडिएटरी विच इज द KVK, ये कुल मिला करके हमारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। इस उम्मीद को ही लेकर के आज के दिन मैं यहाँ से पूछ करने लग रहा हूँ। आप लोगों का शुक्रिया। जय हिंद।